server after 45 days. In case you are found COVID positive, millions of data-hungry consumers across India may soon enjoy top download speeds and a quality video experience anywhere in the country, even in places without mobile coverage and at all times. This after the Union Cabinet cleared a proposal to boost national broadband penetration through the public Wi-Fi route using unlicensed entities. Would it be something like the PCO model of before? What are the processes that will be followed to implement the decision, and how would it benefit people? We take a look at all these aspects in today's edition of our program Aatmanirbhar Bharat. Hello and welcome. I'm Rukma and with me is Nikhil. Hello Nikhil. हेलो रुकमा, बहुत शुक्रिया इतने जिस तरह से आपने पूरी विस्तार से इस बात को बताया। नमस्कार दर्शकों, और अगले 1 घंटे में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप उस समय की कल्पना करिए जब डेटा को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के मारामारी रहती थी और बहुत कीमतें भी उसकी हुआ करती थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने इस विषय में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, पीएम वाणी। इसके जरिए देश भर में वाईफाई का नेटवर्क हो सकेगा और देश भर में तमाम सुदूर स्थानों पर, ऐसी जगहों पर जहां पर इंटरनेट की पहुंच के विषय में पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, वहां पर अब वाईफाई के जरिए इंटरनेट की पहुंच हो सकेगी, ब्रॉडबैंड की पहुंच हो सकेगी। तो कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है ये, इसके विषय में हम विस्तार से अगले 1 घंटे में बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। खास मेहमानों से आप तारुफ कराएंगे दर्शकों का? Right, we have with us Anshu Prakash, who is the Secretary in the Department of Telecom, Government of India. Debashish Bhattacharya, who is DDG Broadband India Forum. Shubhendu Sharma, founder Wi-Fi Dabba India Private Limited. Thank you so much to all our guests for joining us on the show. First of all, coming to you, Anshu Prakash ji, what can you tell us about PM WANI? What kind of a timeline are we looking at? Who would be your which would be your priority areas, and how would you implement the process of providing digital access to all? Thank you, Rukma ji. PM WANI, Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface. The acronym is PM WANI. What is this? What is the ecosystem for PM WANI? Who are the players? What are the advantages and how will it operate? I will be very happy to share with you. आपके दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि PM WANI क्या है, इसका इकोसिस्टम जो है, इसमें कौन कौन है, कौन प्लेयर्स हैं, इससे लोगों को क्या लाभ होगा और ये ऑपरेट कैसे करेगा. Now Wi-Fi, as we all know, we all use it. There are certain spectrum bands which are delicensed in 2.4 gigahertz and 5.2 gigahertz. They are free bands. PM WANI uses the Wi-Fi network, the spectrum which is available, to provide access to millions of people through public Wi-Fi networks. That is why it is called Wi-Fi Access Network Interface. The interface of the people with broadband is through Wi-Fi, and in this case public Wi-Fi. What is the ecosystem? इसमें ecosystem क्या है? आपको याद होगा, और जो यंग लोग हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको शायद इतना इसका नॉलेज ना हो, PCO होते थे, पब्लिक कॉल बूथ होते थे, जगह जगह पे एक पब्लिक कॉल के लिए बूथ स्थापित किए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में जी. उसी एनालॉजी पे अब PDO, पब्लिक डेटा ऑफिस, क्योंकि ब्रॉडबैंड हमको डेटा देता है, इंटरनेट हमको डेटा देता है जी. तो PDO के तमाम पूरे देश में हम स्थापित करने जा रहे हैं, और ये हम नहीं करेंगे, ये लोग खुद करेंगे जी. जो कि अपने स्थान पे, अपनी जगह पे, अपनी दुकान पे, अपनी प्रीमाइसेस पे वो एक वाईफाई एक्सेस का पॉइंट बनाएंगे, जिसके द्वारा वहाँ पे जो भी लोग आएंगे, जो भी कस्टमर्स आएंगे, जो भी विजिटर्स आएंगे, वो वाईफाई को एक्सेस कर पाएंगे. अब PDO कौन बन सकता है? कोई भी बन सकता है. हमसे, सरकार से
कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई फ़ी नहीं है। अभी तक अगर कोई इंटरनेट देता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस लेके हमारे घर में हमको FTTH कनेक्शंस देते हैं। अब FTTH कनेक्शंस तो जो धनी लोग हैं, पीपल हु आर रिच, हु कैन अफोर्ड, कैन गेट FTTH कनेक्शंस। पर गरीब का क्या होगा, आम जो व्यक्ति है उसका क्या होगा? सो इन लोगों के लिए हम मार्केट्स में जाते हैं, कोई पान वाला है, कोई पकौड़े बेचता है, कोई टिक्की बेचता है, कोई ग्रोसरी शॉप है, किराने की दुकान है, कोई भी अपने दुकान पे वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, एक वाईफाई पॉइंट लगा सकता है। इस वाईफाई के लिए उसको पीछे से बैकहॉल चाहिए। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी? तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बैंडविड्थ खरीदेगा जी। जब वो बैंडविड्थ बेचेंगे तो उनको बैंडविड्थ का लाभ भी होगा, उसके पैसे मिलेंगे। इस बैंडविड्थ से वो अपने दुकान पे या अपनी शॉप प्रीमाइसेस पे जो उसने एक नेटवर्क लगाया है, एक एक्सेस पॉइंट लगाया है, उससे जो भी वहाँ पे आता है वो एक्सेस कर पाएगा। अब जो एक्सेस करता है उसके पास एक डिवाइस तो होगी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कुछ तो होना पड़ेगा जी। और इसका जो KYC है, नो योर कस्टमर, मतलब इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा कि कौन व्यक्ति है जो कि ये यूज़ कर रहा है, जिससे ये ऐप प्रोवाइडर करेगा। तो इसमें ऐप का जो एक इकोसिस्टम है उसको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। ऐप प्रोवाइडर्स विल बी एनकरेज। नाउ ऐप प्रोवाइडर कैन हैव ऑल इंडिया फुटप्रिंट। कोई एक दूर पटना में ऐप प्रोवाइडर बैठा है, वो पूरे भारत को कवर कर सकता है। तो ये नहीं है कि बहुत सारे ऐप प्रोवाइडर चाहिए होंगे। अगर 5-10 ऐप प्रोवाइडर भी हैं तो हमारा काम चल जाता है। और ऐप को कैसे एक्सेस करा जाएगा? गूगल प्ले स्टोर पे जा सकता है, आई प्ले में जा सकता है, और हम इसका एडवर्टीजमेंट भी करेंगे, वेबसाइट पे भी डालेंगे, लिंक्स भी देंगे, URL में मेंशन करेंगे जी। तो ऐप एक व्यक्ति ने डाउनलोड कर ली, उससे उसका ऑथेंटिकेशन हो गया कि ये व्यक्ति कौन है, और फिर जब वो वाईफाई एक्सेस करता है तो कूपन खरीद सकता है ऑनलाइन, भीम, पेटीएम, किसी भी तरीके से। ये सब काम करेंगे PDOA, मतलब पब्लिक डेटा ऑफिसेज, जो तमाम इतने सारे स्थापित होंगे उनको एग्रीगेट करने वाले एग्रीगेटर्स। और ये व्यक्ति हिसाब रखेंगे कि किस व्यक्ति ने वाईफाई एक्सेस करने के लिए ब्रॉडबैंड खरीदा, कितना उसका बैलेंस है, कितना उसने यूज कर लिया जी। अब ये प्राइस जो होगी जिस पे ब्रॉडबैंड हम खरीद पाएंगे, ये बहुत सस्ती होगी और क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। अभी तक आप देखिए जितनी भी पैक्स आते हैं, सबसे सस्ता 199 रुपये का आता है, उसमें भी पर डे यूजेज का एक कैप है। पर जब हम पब्लिक वाईफाई में जाएंगे तो एक तो बैकहॉल हमको अशोर्ड आएगा, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे नहीं आएगा। मोबाइल नेटवर्क के अंदर अगर एक टावर में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो हमारी जो एक क्वालिटी है वो कम हो जाती है जी। पर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क में क्योंकि बैकहॉल एक वायर लाइन के माध्यम से आ रहा है, एक अशोर्ड हमको बैकहॉल मिल रहा है, तो स्पीड बहुत हाई रहेगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत हाई रहेगी। तो जो हमारे यंग लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो लेबर है अपना उसने काम किया, बीच में चाय पीने के लिए गया और उसको कुछ देखना है, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो पब्लिक वाईफाई के माध्यम से देख सकता है। और PDOA जो होता है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जी, ये कई सारे PDO के पास जाएगा, कई जगह पे होगा, डिफरेंट स्टेट्स में भी हो सकता है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है और वो उसी PDOA का कस्टमर है, तो वो दूसरी जगह भी अपना पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएगा जी। मैं जानता हूं कि जो नाम PDOA हैं ये थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, इसको हम बदल रहे हैं। Right, sir. Anshu ji, पूरा सिस्टम का नाम हो गया at this point, right, Anshu ji, at this point, I'd like to bring in another guest. We'll be coming back to you to understand more about the process with which, by which, according to which the PDOAs will be doing their work. But first, I'd like to ask another guest on our show, Debashish Bhattacharya. You're the DDG of the Broadband India Forum. How do you look at this decision of the Union Cabinet? Was it a decision that took a long time in coming and that has been anticipated, that does fulfill a need that people in India have had for a long time? Thank you very much, Rukma ji. Good afternoon and namaskar to all viewers.
Namaste. At the outset, I'd like to just say a couple of words about who we are at Broadband India Forum. So we are a knowledge-based policy and regulatory think tank, which has been working for a little over 5 years now for the enhancement and proliferation of the broadband ecosystem in a technology agnostic and service agnostic manner. We are completely non-partisan and we believe in inclusivity to all, which means the proliferation of broadband. In consonance with the Honorable Prime Minister's vision, Shri Narendra Modi ji, of Digital India, of providing broadband to all, and for inculcating Aatmanirbhar Bharat in India. I think this PM WANI policy will provide great impetus to all these national missions that we have. As far as and perhaps this is going to be the biggest succor to the common man, which is the Aam Aadmi. Today, if you look at the broadband penetration in the country, as per the latest TRAI reports, we have a little over 700 million broadband connections in the country, out of which a majority of which are in the urban areas. But notwithstanding that, these are broadband connections and not unique subscribers. As we all know, most of us carry, all of these are on mobile. 98% of these broadband connections are on mobile phones. And most of us, at least in the urban areas, have more than one phone. We have two phones on an average, or maybe 1.5. So given the fact that these are 700 million broadband connections, the number of unique broadband subscribers is only a little over 400 million. In a country with 1.3 billion population, we still have 900 million people who are not yet to get broadband connectivity. And we at Broadband India Forum are of the opinion that unlike what has happened in the mobile revolution, where one single technology, which is the cellular technology, has helped provide mobile connectivity to all, unfortunately, broadband in a country like ours, in a diverse country like ours, which has rural and remote areas, geographically challenged terrains, we are of the firm opinion that one single technology, the mobile technology, cannot provide adequate, available, ubiquitous broadband in an affordable manner to all. And therefore, right, public Debashish ji, we'll be coming back to you, but you made a very important statement there about 900 million users still needing an internet connection. We'd like to ask Mr. Shubhendu Sharma, how you feel that a decision like this is the need of the hour at this time when internet has become so important, all the more so after the COVID pandemic? Absolutely. First of all, thank you for having me today, and Vic, good afternoon to all your viewers. We are a startup based out of Bangalore, working in the ISP industry. It's been 4 years of our working where we are deploying public Wi-Fi hotspots all over Bangalore and other few cities in the country. Our experience shows us that internet is becoming a fundamental right, whether you need any common man who wants to access, whether it's government schemes or healthcare, education. This is becoming a fundamental sort of right as we are moving forward in our country. Our Honorable PM's vision of digital India cannot be completed if we have connectivity available in every nook and corner of this country. So to proliferate this, internet access across this country and create millions of jobs which are connected to having internet access, this is becoming a very critical part of the whole ecosystem. In our opinion, we believe that this public policy, which has now been approved by our cabinet, will be of same importance what we saw a few years back, what UPI policy did for this country. We truly believe, if implemented well, we will have another UPI-like movement in our history of India, where we could, have connectivity for everybody in this country, and which would, fulfill not just creation of more jobs, but also will ensure that our goal of 5 trillion or 10 trillion economy is fulfilled on time. So I think, not going into the details, and repeating the more similar points, I want to keep it short and simple. This policy, if implemented well, has the potential to be the next UPI in this telecom industry. Yeah.
जी बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी है। इसके और क्या किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं आम लोग, इस विषय पर आगे चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर वापस आएंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा जारी रहेगी। समझ गए साहब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर एनडीए में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पीएम वाणी पर कि किस तरह से देश भर में वाईफाई का नेटवर्क होगा और आने वाले समय में डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। एक और कदम बढ़ाया है भारत ने। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशु प्रकाश जी, आपके पास एक बार फिर वापस आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपने बताया कि जो आम लोग किस तरह से इससे जुड़ सकेंगे। एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि जो पीडीओ जो खोलने वाले लोग हैं, क्या उनके पास ऐसा क्या इंसेंटिव रहेगा कि वो लोग जुड़े इससे? एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जो आम यूजर है, क्या उसको ये सेवा मुफ्त में मिलेगी या उसको भी उसके लिए कुछ पैसे या कोई उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा? बहुत अच्छे आपने दोनों सवाल पूछे हैं निखिल जी। जो पीडीओ है जिसके माध्यम से पब्लिक वाईफाई को एक्सेस किया जाएगा, उसको बहुत लाभ है। देखिए, एक छोटी सी दुकान है किसी की, वहाँ पे अगर फुटफॉल जो है, अगर लोगों को पता है यहाँ पे हमको पब्लिक वाईफाई भी एक्सेस हो सकता है, तो वहाँ पे फुटफॉल बढ़ जाता है। रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लोग ज़्यादा आ सकते हैं। कोई चने कुलचे बेच रहा है, कोई इनफॉर्मल सेक्टर का भी कोई व्यक्ति है, तो उसका फुटफॉल वहाँ पे बढ़ जाएगा। प्लस जितना वो सेल कर पाता है, उसको सेल पे कोई इंसेंटिव भी मिलेगा। अगर आप ये सोचें कि अगर एक दिन में उसने 100 रुपये के भी कूपन बेच दिए, तो महीने में उसकी 3000 रुपये तो इनकम बढ़ गई। और फिर आप ये देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारा भारत नेट तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, वहाँ पे हम हर एक गाँव में 2 पब्लिक वाईफाई के हम हॉटस्पॉट दे रहे हैं। हम उनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं वानी प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे भी लोगों को जाने का फ़ायदा होगा। तो जो पीडीओ है, उसका इनकम निश्चित रूप में बढ़ेगा और उसकी दुकान की जो एक पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ जाएगी कि ये सिर्फ यहाँ पे डबल रोटी और अंडा और चीज़ें नहीं बेचता, यहाँ पर तो ब्रॉडबैंड भी मिलता है। कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई सफल की आउटलेट है, कोई अमूल की आउटलेट है, वहाँ पे भी अगर पब्लिक वाईफाई लगा हुआ है तो लोगों को उसका लाभ होगा। पूरी मार्केट्स में हो सकता है। फिर एक तो आपने ये सवाल पूछा, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की नीड बहुत बढ़ गई है। अब ये नेसेसिटी बन गया है और कोविड-19 के बाद तो ये और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमको निश्चित रूप में ब्रॉडबैंड की एक्सेस सबको देनी है और ये एक्सेस ऐसी होनी है कि वो अफोर्डेबल हो। तो फिर आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या ये मुफ्त होगा? मॉडल में ऐसा नहीं है कि मुफ्त होगा, पर हमारा ये मानना है, क्योंकि जो पीडीओए हैं वो इतने रहे हैं, माई गव के माध्यम से एक कॉन्टेस्ट अब हो रहा है अगले 3-4 दिन में, और आपके दर्शकों को मैं बोलूँगा इस कॉन्टेस्ट में जुड़ें, हमको अच्छा नाम बताएं। पीडीओए बड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है,
तो इसका अगर अच्छा नाम हमको बताएं, वो नाम हम लेंगे। चलिए, तो इसमें और परिवर्तन आगे आने वाला है। मॉडल का फुटप्रिंट आएगा। जी बिल्कुल, आगे आने वाला परिवर्तन है। इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति की तैयारी है तो उत्साहित होना बहुत स्वाभाविक है। इस समय देबाशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से डिजिटल क्रांति की बात हो रही है और जो फाइबर केबल नेटवर्क से गांव के ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है, अब वाणी के जरिए गांव-गांव तक के जो व्यापारिक समुदाय है या जो कहा जाए कि जो आम घर है, वहां तक भी सुदूर इलाकों तक ये पहुंच सकेगा। किस तरह से ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो इंटरनेट या जो ब्रॉडबैंड है ये आबाद पहुंचे और इसकी जो गति है वो जो इसकी स्पीड है वो प्रॉपर रहे? क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि इंटरनेट बीच बीच में कई बार बाधित होने लगता है, वो सीमलेस नहीं होता और उसकी स्पीड भी ठीक नहीं होती। निखिल जी, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, तो अगर आपको इतराज ना हो और आपके व्यूअर्स को इतराज ना हो, किसी भी भाषा में थोड़ा इंग्लिश में जवाब। जी जी बिल्कुल, सवाल मैं समझ गया हूँ। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट as far as the backhaul is concerned, Secretary Telecom Shri Anshul Prakash ji has clarified that most of the Wi-Fi access points or hotspots will be connected using fiber. So therefore you will see difference between the current backhaul on the mobile broadband vis-a-vis the Wi-Fi. So once the backhaul is assured and the bandwidth is assured, then I think the speeds are likely to be much better. As far as the seamless operation of the Wi-Fi network is concerned, I think this is where the revolution has really happened. The PMWANI uses the WANI architecture or Wi-Fi access network interface, which has been indigenously conceived, designed and developed by the telecom sector regulator, Telecom Regulatory Authority of India, in conjunction with some young entrepreneurs about 3 years ago. And then there were extensive trials or proof of concepts that were carried out between a number of players, almost close to about 50 to 60 entrepreneurs joined the proof of concept, and this was carried out extensively for a period of 6 months. After it was completely foolproof and trialed, and the results were and the outcomes were in consonance with the draft with the policy which had the recommendation before that. It was then sent to the government of India for taking a final decision and approval, which has now come in the form of the PM-WANI policy. So what the WANI architecture allows you is that you can roam from one Wi-Fi hotspot in one location to another Wi-Fi hotspot in another location without having to re-authenticate and re-validate your payment details. Normally, if you were not having this, what you would have to do is that when you are moving from one location, from one market, from one shop in the market to another shop in the market, so every time you go from one shop to the other shop, you would have to again enter your KYC, enter your profile details. You would have to get the KYC done. After you get your authentication, then you would have to get your payment details. And after the payment was validated, only then you could use the Wi-Fi. This is extremely difficult and cumbersome for an Aam Aadmi to use. And this is where WANI comes in very handy. And the PM-WANI follows that WANI architecture, which was voted by TRAI and has accepted all aspects of it, thereby making Wi-Fi just like mobile roaming, which means that you can move from one location to the other, you can move from one city to another, you can move from one part of the country to another part of the country. As long as the Wi-Fi hotspot in your area is WANI compliant, you can actually have a seamless operation. You don't need to give your details, you don't need to get the KYC done, and even your payment details will be automatically passed on to the next hotspot or the next PDO, as Secretary Ji has mentioned, without having to re-authenticate. So this will seem to be just like you're doing cellular. So I think it is a great revolution for the Aam Aadmi. It will, as Secretary Ji also mentioned, that it will create entrepreneurship in a big level. It will create small and micro level entrepreneurship, because these are the kind of people who will set up the PDOs. In fact,
to be honest with you, people like you and me and many of your viewers would love to become PTOs in the future, because what is there? Kuch karna nahi hai. There is no license, there is no registration, no license fee. All you have to do is just put up a little tappa called a Wi-Fi hotspot and get some bandwidth or a few MBs from one of the service providers, and you are on. Services, tomorrow you become the service providers, and who knows, God forbid, in a few years' time, you may become the Sunil Bharti of this world. So it is a great opportunity for all people to start service and become small entrepreneurs. This will also not only bring employment, but also create investment into the country in digital infrastructure, which is badly needed, because we are today trying to move from the traditional telecom network to a digitally enabled network. And to be able to have a fully digital enabled network, you need investments in every area, in fiber, in towers, in creating public Wi-Fi hotspots, in creating other kinds of infrastructure, small cells for 5G in the next revolution. So there are many forms of investments that you need. This will enable micro investments into the network through the means of these small and village level entrepreneurs, which will be created, and will also give a boost to the MSME sector, which has been badly hit by the pandemic. I believe this is a great opportunity to bring in, to generate employment as well as to generate investments, and also FDI. If you look at the rules which the DOT has put out on its website, it says that you can provide FDI can be also being brought in, which is foreign direct investment, into the PTOs and the app providers as per the Government of India rules. So it is a great opportunity. Shubhendu, do you agree with that view, as that it's a great opportunity, especially for private players, for small entrepreneurs? Are we looking at a future where we can finally have cities that are connected through Wi-Fi? Because as far as reports suggest, as far as research suggests, Wi-Fi is very important for smart cities, whether it is to provide services for highly populated cities like ours, in comparison to, while comparing it to a country like Brazil, for example. So can it make a huge difference as far as services to people are concerned, and also for entrepreneurs themselves? Absolutely, yes. Like I would 100% agree to what the other gentlemen have so far said on the show, right? So अगर आप कंपेयर करें यूएस से, यूरोपियन देशों से, जहाँ पर वाईफाई मिलियंस एंड मिलियंस के तादाद में मौजूद है, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी क्यों है लोगों के अंदर? क्योंकि उनको इंटरनेट मिलता है ऑलमोस्ट फ्री के दामों पर, बिकॉज ऑफ दीज वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर दैट दीज गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैव क्रिएटेड इन दीज कंट्रीज, राइट? तो हमारे जो प्रधानमंत्री का विजन है डिजिटल इंडिया का, वो तभी पूर्ण होएगा जब हमारे देश के अंदर भी एक वाईफाई की क्रांति आ सकेगी. सेलुलर ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं when it comes to mobility, right? But alone they cannot fulfill the aspirations of 1.3 billion people, right? You need a combination of both technologies, more technologies to fulfill the demand that this country has. अगर आप कोविड पीरियड के डेटा उठा के देखेंगे, the kind of bandwidth usage that has surged, right? Alone telecom companies, the cellular technology cannot fulfill that demand, right? We are growing into an economy where internet access has to be present for not just for us, but the future generations that are going to be in this country. So I would like to brief you about a couple of use cases that we have been able to solve at our startup Wi-Fi Dabba. जी. जैसे सेक्रेटरी सर ने बात करी कि एक टॉप डाउन इफेक्ट होता है जब आप एक बिजनेस को, एक छोटे दुकानदार को, एक चाय वाले की दुकान को आप इंटरनेट एनेबल्ड बनाते हैं. जी. हमने क्या देखा है अपने पिछले 3 सालों के अंदर, एक छोटे दुकानदार जिसकी मात्र आय दिन में हुआ करती 150, 200, 250 रुपए, इंटरनेट वाईफाई लगाने के बाद दे वर एबल टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू फॉर द डे बाय अनदर 100 रुपीज. ये 100 रुपए का इंक्रीज इनके रेवेन्यू के लिए बहुत बड़ा होता है. इट इज, इफ यू लुक इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वी आर एडिंग 50% मोर रेवेन्यू इनटू द बिजनेस लाइन. आप केवल अब वाईफाई नहीं बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं एक इंश्योरेंस, आप बेच रहे हैं हेल्थ केयर की सर्विसेज, आप बेच रहे हैं आधार के एनरोलमेंट सेंटर्स. आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं एक वाईफाई के माध्यम से, जिसमें आप हजारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर सकते हैं इन छोटे शहरों में, छोटे गांव में. और हमारी कंपनीज जैसे जो स्टार्टअप्स जो काम कर रही हैं, वो इनको एक पूरा एंड टू एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती हैं और एक
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी बहुत सही है। ये क्रिएट करेगी ना सिर्फ जॉब्स बट एंटरप्रेन्योर्स, जो कि इस देश की रिक्वायरमेंट है टू बिकम द ग्रोथ दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस सेक्टर। जी बिल्कुल, यहाँ पर रुकमा इसके बाद बात कर लेंगे। जैसे आपने कहा कि स्मार्ट सिटीज़ की, तो आगे इसके ज़रिए किस तरह से स्मार्ट विलेजेस बन सकेंगे, लेकिन इस पर बात करने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर एनडीए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से देश भर में वाईफाई का नेटवर्क होगा पीएम वाणी के जरिए। We're talking about PM WANI, as Nikhil just mentioned, and you're watching Aatmanirbhar Bharat. Joining us on our show is Anshu Prakash, who is the Secretary, Department of Telecom, and he's been telling us about how the process will work, what kind of processes will be implemented. When we talk about smart cities, Anshu Prakash ji, how do you look at this? How is the government looking at this as providing an opportunity? Rukma ji, a basic requirement of a smart city is broadband. And broadband will be through mobile, broadband will be through FTTH, fiber to the home, but a very, very important and a very pervasive component of broadband will be public Wi-Fi networks through PM WANI. So there will be no smart city without PM WANI. But PM WANI ecosystem will not be limited to smart cities alone. This will pervade all over the country. It will make the villages smart. In fact, broadband is the carriage on which increasingly our cities and villages will become smart. This PM WANI has the potential to bring a revolution in broadband. Broadband में क्रांति लाने की क्षमता है इस PM WANI के अंदर। कोई लाइसेंस नहीं है, कोई लाइसेंस फी नहीं है, और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, जो हम वाईफाई का जो एक्सेस पॉइंट्स लगेंगे वो इंडिया, मेड इन इंडिया होंगे। ये हम गाइडलाइंस का पार्ट बनाएंगे। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर मेकिंग दीज इन इंडिया नाउ, सो दीज विल बी एनकरेज्ड। एंड टू मोर थिंग्स, द वैरायटी ऑफ बिजनेस मॉडल्स विच विल इमर्ज, वी कैनॉट इवन इमेजिन एट दिस स्टेज. I'll just give you an example. In a city, for example, in Delhi, a PDOA has different networks where different PDOAs are there. I am a baker. I make pastries and cakes, and I know that what I made today will become stale tomorrow. At 8 p.m., I can put an advertisement to the public Wi-Fi networks that, okay, my price was 100, I am now making it 50. Whoever wants can come and buy. All those who are accessing the network will know. And advertisement at what cost? Virtually no cost. So they will be advertising. Then a lot of content creation for public Wi-Fi will take place. A lot of new applications will come. So we have to wait and see how this model evolves. But the youngsters, our entrepreneurs, our startups are really, really going to work on this. In fact, in this coming week, we are having a big meeting. In fact, 2 batches with many of these who were involved in this trial phase earlier, to further decide how we have to ensure that the ecosystem is nurtured. And I must thank TRAI, the Telecom Regulatory Authority of India, because this was their suggestion, which has been developed, and it has been blessed by a person no other than the Honorable Prime Minister. And this name PM WANI has come. So we will certainly have a whole revolution of broadband based on this. जी,
अंशु प्रकाश जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि जब बात स्मार्ट सिटीज़ की होगी तो स्मार्ट विलेजेस भी जेहन में आएंगे, और तमाम कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से कि आत्मनिर्भर बन सके हमारी जो गांव की इकाइयां हैं, जो विलेज पंचायत है, एमएसएमई सेक्टर है, तमाम सारी चीज़ें। किस तरह से आप देखते हैं आने वाले समय में, एक तो ये प्रोजेक्ट जो है पूरा, ये कब तक अमल में आ सकेगा, कब तक हम ये जो क्रांति जिसकी बात कर रहे हैं ये कब तक परवान चढ़ सकेगी, एक तो ये भी समझना चाहेंगे। और क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई देखते हैं आप हमारे गाँवों की इसके जरिए? निश्चित गांव की तस्वीर बदल रही है। ये इतनी जो योजनाएं चल रही हैं, आवास योजना से लेके आप अगर देखें तो गांव की तो तस्वीर बदल ही रही है जी। पर भारत नेट, अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं तो टेलीकॉम में अभी तक जो भारत नेट से हम ग्राम पंचायत तक जा रहे थे, आप याद करें कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि प्रत्येक गांव में 6 लाख से ऊपर हमारे गांव हैं, उन सब में हम फाइबर कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। 6 लाख से ज़्यादा गांव और उन तक हम फाइबर लेके चले जाएंगे, और 1000 दिन के अंदर, जिसपे हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। अब जब फाइबर जाएगा तो बैकहॉल तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड की आ गई, उससे एक्सेस कैसे दिलाया जाए? तो एक्सेस दिलाने के कई माध्यम हैं। एक तो है FTTH जो घर तक ब्रॉडबैंड जाएगा, पर ज़्यादा आसान और ज़्यादा लोगों को कवर करने वाला जो माध्यम है वो है पब्लिक वाईफाई। तो हर एक गाँव में हम पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स भारत नेट के माध्यम से लगाएंगे, और जो इतनी सारी दुकानें हैं गांव में, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, फिर पंचायत घर है, और जो भी लगाना चाहेगा वो PM वानी का एक अंग बन के अपना वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगा सकता है। और उस वाईफाई एक्सेस पॉइंट की जो कवरेज है वो आसपास 50 मीटर 100 मीटर तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल वो वाईफाई एक्सेस सिस्टम लगाता है जी। इससे लोकल जो यहाँ पे एक व्यक्ति है उसकी आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को फायदा भी होगा। तो हमारे जो गांव हैं वो तो स्मार्ट और बेहतर होने के रूप में बढ़ते ही जा रहे हैं, और टेलीकॉम की इसमें बहुत ही अहम भूमिका होगी। जी बिल्कुल। Right. Well, coming to you, Debashish, when we talk about smart villages, we are looking at services to be provided to villages. We know about the kind of problems that, say for example, farmers have. Say for example, the kind of problems that people in small villages, marooned areas, remote areas have to face after a disaster has struck. As a think tank, have you observed, can we conclude that the groundwork, the digital literacy that is needed to access the internet, to use the internet for the proper purpose, has that groundwork been laid in our villages? So first of all, I think I wish to once again compliment the Honorable Prime Minister and the Government of India through the Department of Telecommunications for laying down a series of measures, including number of policies, which started with the mother policy, which is the National Digital Communications Policy in 2018, which has laid the groundwork for creating a digital transformation, which is so much needed today in the sector. It is actually the bedrock of all the sectors in the economy, be it automation, be it manufacturing, be it automotive, be it health, be it education. That the very fact that telecom is no more a vertical or a separate ministry, or it is a ministry, it is a separate vertical by itself, does not become, it is not a, it does not have to fend for it independently, but it is becoming the central architecture on which all the other verticals are going to rest, because everything is turning digital today. So therefore, keeping in consonance with the changes that are happening and the power of the internet, as we have witnessed in the urban areas, we would need to provide, internet has become a bare essential for people to transform the way they work, the way they educate themselves, the way they actually get healthcare, the way they actually do financial transactions, the way they actually download entertainment. Entertainment is no more, going to the movies. Courtesy the OTTs, now everybody is wanting to watch the latest releases that are coming on the OTT platforms.
All that is available on the internet. So once you provide internet access, be it in the urban areas which are already being provided by the larger service providers, it is the rural and the remote areas which need internet. And that is the gap that is going to be plugged with the help of the PM-WANI policy, with the help of creation of small and micro level entrepreneurs, with the help of people like you and me who can start the PDO service from tomorrow itself once the policy is notified and the guidelines come. So it is going to create a revolution. It is going to provide the power of the internet, which is going to help for people to actually transact their lives and to raise their incomes, to educate themselves, and to improve the overall quality of life in the rural areas. I go back to 2006 when our then president, Mr. APJ Abdul Kalam, had coined a term, a beautiful term called PURA, P-U-R-A. It stood for Provision of Urban Amenities in the Rural Areas. It is this public Wi-Fi policy of PM-WANI which is going to actually lead to bridging the digital divide which exists today between the urban and the rural areas. And it's going to help achieve the vision of the then President, Mr. Abdul Kalam, that is providing all the amenities and all the facilities that we are getting today in the cities and in the urban areas to the rural areas, which means that the tomorrow of this of the days of tomorrow, you will see no difference between a smart village and a smart city. They will have the same amenities together. So we would rather, let's say a few years down the line, not be calling them as smart villages, but we would call them as smart digital or twin cities, which means one in the maybe in a city close to a location like Delhi, and maybe one which is about 100 kilometers away from the city of Delhi. Both will have the same amenity. This transformation, this equalization, this democratization of providing the same internet and the same services which are available through the power of the internet will be available once PM-WANI kicks in and the policy gets implemented in true spirit and form. जी बिल्कुल, ये सबको एक तरह से एक समान और एक गति से सभी को ये चीज़ मिलेगी। करेक्ट जी बिल्कुल। शुभेंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो बताइए कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी आपको नजर आते हैं इस योजना में, और दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि जितनी महत्वाकांक्षी ये योजना है और जितने इसके उजले पक्ष हमने देखे, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या कहा जाए यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में और दूसरे देशों में जितना स्पीड से और जितना आबाद गति से इंटरनेट हमें मिलता है, उस स्थिति में हमारे गांव, जो सुदूर गांव हैं, वो कब तक पहुंच सकेंगे? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस स्पीड से भारत नेट और अदर आईएसपीज काम कर रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचने में, आई थिंक हमारी स्पीड्स ऑलरेडी बेटर होती जा रही हैं यूरोपियन और यूएस देशों से कंपेयर करें। आप हमारी बात करें, वाईफाई डब्बा आज की तारीख में 1 Gbps की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में, जो कि जिनकी जनसंख्या है मात्र 5000-6000 लोगों की। हमने वो पूरे के पूरे टाउन्स वानी वाईफाई के कंप्लायंट हार्डवेयर लगा के पूरे के पूरे अब विलेजेस जो हैं वो अब वाईफाई के ऊपर हैं, उनको सिम कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं वहाँ के लोग जब चाहें जितना चाहें, और मात्र 1 रुपए में। तो दे पे ओनली 1 rupee एट अ टाइम। 1 रुपए में उन्हें 1 GB का डेटा मिलता है, वो कनेक्टेड रहते हैं। 1 GB का डेटा सफिशिएंट होता है, मतलब पूरे दिन मतलब आप चाहें तो पूरे हफ्ते भी रह सकते हैं कनेक्टेड। तो अगर आप देखेंगे स्पीड्स वाइज और जो डेटा की जो प्राइसिंग जो कम होते जा रहे हैं, वो बिकॉज हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है, हमारी परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है बैंडविड्थ के मामलों में, कि जैसा सेक्रेटरी सर ने पहले कहा कि आप चौंकिएगा मत कि आने वाले दिनों में आईएसपी प्रोवाइडर्स वाईफाई PM-WANI के द्वारा फ्री में भी बैंडविड्थ प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो आप चौंकिएगा मत उस सिचुएशन में देखिए। आज की तारीख में हम 1 रुपए में दे रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी और भी कम हो सकता है। अगर हम बात करें कि कैसे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, तो इसके अंदर जिस उत्साह के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं और सरकार हमें मदद कर रही है हमारे जैसे स्टार्टअप्स को, अगर ये जिसे कहेंगे हम जो एक कॉम्बिनेशन अगर ये बना रहा, तो ये कोई रोक नहीं सकता कि हमारे पूरे देश के अंदर आने वाले 2 सालों के अंदर आप देखेंगे कि मिलियंस ऑफ हॉटस्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपके घर में अगर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो आपको मात्र किसी भी कंपनी से, हमारी तरह की किसी भी कंपनी से एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है अपने रूटर के ऊपर, और आप भी PM-WANI के साथ जुड़ के
अपनी बैंडविड्थ को रीसेल कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो आपकी अनयूज्ड बैंडविड्थ रहती है, आप उसको रीसेल करके ना सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमा सकें उसके जरिए से, बल्कि आप किसी जरूरतमंद को जिसके पास 200 रुपए 300 रुपए खर्च करने की क्षमता नहीं है एक साथ, आप उसे 2 रुपए में इंटरनेट प्रोवाइड करा पाएंगे। तो एक ये सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारे देश के लिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मतलब मैं कि जितना थैंक यू करूं हमारे पीएम को उतना कम है जो उन्होंने पॉलिसी चेंज करी है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ में आए हैं हमारे प्रधानमंत्री, और ये जो पीएम वाणी योजना है निश्चित तौर पर लोगों के जीवन को सुगम बना सकेगी, कारोबारी क्षमता का में इजाफा हो सकेगा, लोग का जो बिजनेस है उस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक कदम और ये इजाफा होगा उस पर निश्चित तौर पर। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो बेहद क्रांतिकारी ये योजना है जो आने वाले समय में जिसको कहते हैं कि पूरे भारत का जो सिनारियो है, चाहे वो ब्रॉडबैंड की बात करें या फिर ओवरऑल बिजनेस एनहांसमेंट की बात करें, उसमें आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अंशु प्रकाश जी जो सेक्रेटरी हैं डीओटी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, आपका बहुत शुक्रिया। देवाशीष भट्टाचार्य जी डीडीजी ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फाउंडर वाईफाई डब्बा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शुभेंदु शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। Many thanks to all our guests for joining us on the show, and today we discussed a very important aspect, the cabinet taking the decision for PM WANI. As India looks forward to a bright future, broadband internet could form a most important aspect of the road ahead, whether it is access to healthcare, education or opportunities for employment or even entertainment. The government through PM WANI will be making it possible for each and every Indian to avail all of this. That's all we have for you. जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव आपने कहा बहुत व्यापक पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रभाव बहुत व्यापक पड़ेगा और आने वाले कुछ ही समय में हम इसके जरिए जो होने वाले परिवर्तन हैं वो देख सकेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।